Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 16. उसकी कुछ practice problems हैं as always जैसे हम अपनी playlist के अंदर करते हुए आ रहे हैं। पहले हम chapter पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी कुछ practice problems उसकी exercises को solve करते हैं. So in the last video we discussed chapter number 16, that was adding and removing elements. That video was hands-on. We took a lot of examples, understanding the concept. So if you haven't watched that video, I would suggest to watch that first and then come back and join me here in the exercises so that you already have the concepts, and then you will be able to solve the exercises yourself as well. And if you're relying on me and you are just watching the tutorial, then that's completely fine. But जैसे जैसे मैं solve करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको समझ भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए. अच्छा, as always, as I have suggested कि आप पहले exercises खुद try करें. For that you would have to watch the video that where I explain the concepts. So after that you will be able to solve the exercises. So I would suggest कि हर एक चैप्टर की एक्सरसाइजेस खुद ट्राई करें, उससे पहले वीडियो देखें, कुछ उसकी प्रैक्टिस करें और देन एक्सरसाइजेस की तरफ जाएं और ट्राई करें. नहीं हो रही ट्यूटोरियल को फॉलो करें. ट्यूटोरियल से देखकर भी आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो फिर एक दो दफ़ा आप खुद चैप्टर की एक्सरसाइजेस ट्राई किया करें so that your concepts become solid. Okay, so let's start with the first one, that is this code declares an empty array. Complete it. अच्छा जी, एक empty array को हमने डिक्लेयर करना है. सो var फाइनल स्कोर्स नाम तो उसने दिया हुआ है, सो स्क्वायर ब्रैकेट्स देके मैं इसको empty array जो है वो डिक्लेयर कर लेता हूँ. बट सेमी कॉलन में भूल गया, तो आते हैं वापस इस पे. ओके, counties is an empty array. Okay, counties. I was expecting countries, but it's okay, counties. What is the value of count is 0. Count is an empty array, so it will be undefined. Undefined or null कुछ भी हो सकता है. In it's saying correct. Okay, उसमें कुछ है ही नहीं तो undefined होगा. What keyword removes the last element from an array? तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके लिए एक फंक्शन होता है पॉप. सही है जी. कीवर्ड तो जस्ट पॉप यहाँ पे दे देते हैं, पॉप दे देते हैं यहाँ पे और करेक्ट इस पे क्लिक कर लेते हैं. ओके जी, सो व्हाट कीवर्ड एड्स वन और मोर एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ एन एरे? एरे के एंड में आपने एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो वो कौन सा कीवर्ड है? So that's push, and check your answer and say correct. Okay, drag and drop. Okay, हमने करना क्या है? Drag the pieces to create a new empty array. अच्छा जी, so first of all var, then array name, then assign, then square brackets, because we don't have any element, empty array hai, so square brackets or semicolon, and check your code against the correct one and it's the same, so we can say I got it right. Okay, click in the box and type the next character. I'll autocomplete. अच्छा, autocomplete है, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं. इट्स पार्ट नंबर 16, तो अब तो आपको आइडिया होना चाहिए. नहीं है तो पिछली वीडियोस देख लें. अच्छा जी, असाइन द नंबर 1 टू द 10th एलिमेंट ऑफ द एरे नम्स. ओके, नम्स हमारे पास एक एरे है, उसके 10th एलिमेंट पे हमने क्या करना है? एक वैल्यू असाइन करनी है, दैट इज 1 और सेमीकोलन एंड में लगा देना है. एंड इट्स सेइंग वेल डन. आपको नहीं पता मैंने 9 क्यों यूज़ किया, 10 क्यों यूज़ नहीं किया, और उसमें 1 कैसे डाल दिया मैंने डायरेक्टली असाइन करके, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता. तो एरेज की वीडियो, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स की वीडियोस आप देख लें, सब आपको समझ आ जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप वी गेट फेल सेफ कोडिंग. अच्छा जी, पता है फेल सेफ कोडिंग क्या होती है? गलत टाइप की स्ट्रोक आपका जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता. रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे पेट्स. ओके, सो पेट्स एरे से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, तो पेट्स डॉट पॉप.
pets.pop, and there you go, and it's saying well done. Okay, next step, create an empty array. Okay, so var let's say nums, कोई भी नाम दे सकते हो, और ये empty array square brackets के साथ end में semicolon must लगाइएगा. Check your answer and it's saying correct. Next step, number 9, change the value of the first element of an array to a new string. Okay, so let's say var, बल्कि declare करने की ज़रूरत ही नहीं है. Let's say names 0 assign hello. ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं. It's up to you, the string and the array name. बाकी मैंडेटरी है कि आप ज़ीरो लिखें. ज़ीरो आपको समझ नहीं आया तो एज ऑलवेज आई वुड सजेस्ट कि पिछली वीडियोस आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है. नेक्स्ट स्टेप, नंबर 10, वी गॉट एड अ न्यू एलिमेंट, अ नंबर, to the end of an array. Okay, so array should be, let's say, nums dot push, and let's say 5 and semicolon, and check your answer and it's saying correct. Next step, number 11, assign string values to the second and fourth elements of an array. String values, so let's say names to the second and fourth. Second is 1. Let's assign it a value of hello, let's say John, and let's say names fourth, so it should be 3. Assign, let's say Julia. ठीक हो गया, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप. Check your answer is saying correct. Next up, add 3 number elements to end of an array. अच्छा, add 3 number elements to the end of an array. Okay जी, so nums dot push, और डायरेक्टली इसके अंदर आपने एरे बनाकर पास कर देने हैं, या लेट्स से 1 2 3 ऐसे भी पास कर सकते हैं. चेक इट आउट, एंड इट्स सेइंग prices dot push this. अच्छा, स्पेस नहीं दिया हमने, सो याद रखिएगा इसके बाद हमने फिर स्पेसेस भी देने हैं कॉमा के बाद. ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, we'll come back to number 12. Time goal. Assign the number 1 to the 10th element of the array, but we have to do it in 25 seconds. Assign the number 1 to the 10th element of the array nums. So nums 9, assign 1 or semicolon. Check your answer and it's saying well done. We done it in 7 seconds. Okay ji. Next step, number 13, we got 25 seconds for this one. Create an empty array. It's very easy. Nums assign, and there you go. Check your answer. We got it right in 5 seconds. Okay, next step, number 15, we got 25 seconds for this one. Change the value of the first element of an array to a new string. Okay, first element, so let's say array and first and space, and the string should be hello in semicolon, and check your answer and saying well done. Okay, 25 seconds for number 16 as well. Okay, so add a new element, a number, to the end of an array. So let's say nums dot push, and let's say 1 semicolon. Check your answer and saying well done. Next up, number 17, we got 50 seconds for this one to solve. Assign string values to the second and fourth elements of an array. String values. Okay, so let's say array 1 assign j, आप कोई भी नाम दे सकते हो. सही है जी. फॉर शॉर्ट मैं अभी के लिए 1 कैरेक्टर दे रहा हूँ. फोर्थ एलिमेंट आप प्रॉपर नाम भी दे सकते हो. लेट्स से जूलिया, एंड चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. आधे टाइम में किया हमने, 24 50. Okay, next step, number 18, we got 35 seconds for this one to solve. Add 3 number elements to the end of an array. याद रखिएगा हमने spaces भी देने हैं. So let's say nums dot push, और number elements हैं तो 1 comma space 2 comma space 5.
semicolon, check your answer, and it's saying well done, we got it right in just 12 seconds. Okay, next up, अब थोड़ी जिंदगी आसान हो गई for the 19 and 20. We are not bounded by the time right now, so 19-20 हम relax होके कर सकते हैं. और याद रखिएगा is always I would say कि आपने झूठ नहीं बोलना है. अगर right direct करके ये आगे चला जाता है, बट आप पहले कोड करें, फिर उसको जो करेक्ट कोड है उससे मैच करें. अगर आपका सही है तो आई गॉट इट राइट पे क्लिक करें, अदरवाइज आई गॉट इट रॉन्ग पे क्लिक करें. ओके जी, सो डिक्लेयर एन एम्प्टी एरे. ओके, var array assign empty brackets, so it's an empty array. Assign a value to one of its elements. Okay, so array, let's say on the first index I would add, let's say 10. Then create an alert whose message is the element. Okay, so alert and array 0. So we should get what? क्या लगता है आपको, क्या आएगा अलर्ट के अंदर, क्या आएगा बताएं? वेल डन, 10 आएगा और 10 आ चुका है हमारे पास. सो नाउ वी कैन से चेक योर कोड अगेंस्ट यस, ऑब्वियसली आप नंबर कुछ भी डाल सकते हैं. आई गॉट इट राइट, अब आप क्लिक कर सकते हैं. नेक्स्ट अप नंबर 20, लाइव कोडिंग एक्सरसाइज. फर्स्ट अप, code an array with one string element. Okay, so var names sign, let's say Ali. Okay, semicolon. Next up, number 2, add an additional element to the array using push. Okay, names dot push, and let's say Ahmad. Next up, create an alert whose message is the last element. Okay, so मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, बट आसान तरीके से कर लेंगे. दैट इज नेम्स, इफ आई कैन स्पेल इट, नेम 1. सो हमारे पास क्या आना चाहिए? अहमद आना चाहिए. रन इट एंड इट्स सेइंग अहमद. सो वी कैन से पहले चेक कर लेते हैं, यस, एंड यहाँ से कर लेते हैं, आई गॉट इट राइट. सो वी आर बैक ऑन नंबर 1. दिस कोड डिक्लेयर्स एन एम्प्टी अरे, कंप्लीट इट. ओके, so square brackets, semicolon, add करें, check your answer, and it's saying correct. Number 12, add 3 elements, number elements to end of an array. So nums dot push, हमने last time याद है space नहीं दिया था, 5, 8, and let's say 1, semicolon, and check your answer, and it's saying correct. So we got all the exercises correct. Congratulations. आप क्या कर सकते हैं कि अगर प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें, उसको टॉप टू बॉटम देख लें. और यहाँ पे आप मुझसे गिटहब पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं. आलम मेहताब मेरा यूज़र नेम है गिटहब का. इसके अलावा गिटहब पे मैंने यूट्यूब, ट्विटर और लिंक्डइन सारे जो लिंक्स हैं वो गिवन है. तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं. ओके गाइज, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन, नए चैप्टर के साथ. टिल देन, टेक केयर.